सबको ऐसे भगवान मम्मी पापा भाई बहन सबको ऐसे दे, सबको दुनिया में बहुत प्यार मिले भगवान जी। हवा भी भरनी है तो खुद भरनी है टायर में, और टायर चेंज करना भी तुझे आना चाहिए। मेरा नींबू पानी खत्म हो गया मेरी बेटियों के। उनका पापा पता ही नहीं चला। अब मेरी मॉम भी इनफैक्ट मेरे को बोलती है कि होस्ट कम दोस्त भव्या आहूजा, और मैं आपका स्वागत करती हूँ इस बेहतरीन कार्यक्रम में जिसका नाम है Hey everyone, welcome to the Human Book by Sharma. Today we have Bhavya Ahuja on the show. Bhavya को मैं कभी मिला नहीं हूँ. In fact, we started following each other on Instagram just recently. और जितना मैं जानता हूँ, जितनी मैंने भव्या के Instagram stories देखी हैं, मुझे इतना तो पता है कि she teaches something, like she teaches English. She keeps conducting these webinars and people keep calling her ma'am. आज कोशिश करेंगे भव्या के बारे में काफी कुछ जानने की. So, Bhavya, why don't you start with giving a small introduction to all the viewers? First of all, I would like to say that thank you so much for coming here, and thank you so much for investing your time seeing this, watching this video. And बात करते हैं अगर आपकी, talking about you, the only connect which I felt, I've already told you that thing, that was being spiritual, because nowadays with youngsters, it's really rare to see someone who's spiritual and someone who follows Bhagavad Gita, because I am someone who follows Bhagavad Gita. And in fact, in my family also, someone who goes on with karma. Okay. So I believe all the theories. I believe whatever is given in Bhagavad Gita is actually a true example in our real lives. True. Arjuna is there, and there are different characters. All I try to imply in my life. I try to stay calm, composed, subtle, relaxed, as much as I can. So, Bhavya, tell something about what you do. See, genuinely, I would say that I just follow my passion, because I don't like people who are into that myth of learning education from copy pen or just gulping up the answers. I'm not one such person. So I want to give a new definition to studies. I want to give a new sort of parameters to the education world, like where people connect their knowledge with colors. Wherever they're going, it's not just the copy and pen. Even if they are going to a kitchen, they should be able to identify the spices. They should be able to think in English. Exactly. That's what my connect has been with my students. So, how did you keep yourself busy during the lockdown? Honestly, initially it was pretty difficult. I think for everyone it was pretty difficult initially, what to do, when to do, and WH family going all around your head. But now things are moving in a more steady manner. So now my timetable is pretty scheduled up. Like I know my morning class. I've started taking international classes. All right. Like I connect with Berlin, I connect with Sydney, I connect with Boston. Okay. So it's pretty scheduled, and I'm happy about that it is scheduled up. Yeah. So now I'm keeping myself busy with giving out my content. Okay. How did lockdown change you as a person? I was a person who always used to be in my own comfort level, relaxing, chilling, being on phone, scrolling Instagram, stalking people, and playing, not PUBG exactly. I've stopped playing it because, I don't know, it's been a hyped game. Yeah. All of these things I used to do, I used to be in a comfort level. But gradually I started noticing a lot of negative things in me. Like I always used to order people, like ye lana ya wo lana. Okay. But gradually the change which has actually imbibed in myself would be, I've started doing my work at my own risk. Yeah. Like whether it's cooking, whether it's making notes, whether it's presentations. Earlier, I used to be dependent on my brother, on my bhabi, on my father, on my mother. But now it's all by myself. So I think I have developed this characteristic. Atmanirbhar. Atmanirbhar, exactly. Bhavya, have you watched any episode of The Human Book? Yes, only one, to be honest.
I think of the girl who fought depression. Yeah, Palak. Yeah, that one. Yeah, Palak. And you also posted her picture like this, someone Yeah, she's she swinging was dancing. by Yeah, dancing. yeah. Yeah. So I watched that episode, and I just kind of understood one simple thing, that it was pretty raw and natural, just Yeah. like two friends talking something on some topic. तो you'd be knowing कि मैं starting में early life की बात करता हूँ, because I believe कि कोई भी अपने childhood से बहुत कुछ सीखता है, और childhood के जो experiences होते हैं, it definitely reflects in his or her personality. तो अपने, because we don't know each other, तो अपने early life experiences के बारे में कुछ बताओ, और अपने college life के बारे में, अपने school life के बारे में, अपनी family के बारे में. Okay, I was a person who was I'm not getting the exact word for it, who used to hit people, और मुझे ये इस प्लेटफॉर्म पे बोलना नहीं चाहिए, मतलब मैंने अपने भाई को बचपन में हथौड़ा मार दिया था सिर पर. God, shit. हथौड़ा मार दिया था. बट मुझे लगता है धीरे धीरे बहुत सारी चीजें सीखी, और अब मुझे लगता है मैं किसी के ऊपर हाथ भी नहीं उठा सकती. I cannot even shout. हाथ उठाना is secondary. I cannot shout in a louder range to anyone. And how did that transition happen? I think with the people in my life, with my family, the biggest support, and with two of my best friends that are my biggest support. That's Nana and Gauri. So with them, I think that has changed. And with the, I'm just thinking a lot of things whether I should say this. No, please don't. Please don't. No, I wanted to talk about something like heartbreaks and all, but then I think it's with everyone, and it develops you as a person from within and outside, both ways. You kind of have that, jazba जिसे कहते हैं, passion. You have that in yourself, and you say कि ये ना उस इंसान ने बहुत कुछ सिखा दिया. Exactly. ऐसा हम बोलते हैं, but I think it's us. Okay. हम बहुत कुछ सीख जाते हैं. Yeah, but those heartbreaks they do trigger that change, right? उसके बाद we start working on ourselves. Don't you think that? That's true, but there's a great saying by Rumi, which says that do not mistake salt for sugar. हाँ, दोनों सफेद रंग के होते हैं, but दोनों का काम अलग होता है. अगर हलवे में नमक डल जाएगा, तो हलवा is going to be a big, humongous blast. It's going to be a blunder. True. So I think it's not the person who kind of triggers you or hurt you. It's you who give the power to someone to hurt you. Like supposedly, if a stranger says to me that, अरे यार कैसी सी है, बहुत बोलती है, बहुत attitude है, मुझे नहीं फर्क पड़ेगा. But if someone who's a loved one says to me कि तेरा ना बाल का बहुत अच्छा नहीं लग रहा, बहुत अजीब सा लग रहा है, and you have developed so many pimples in your face and all that, like यार वो सही बोल रहा है शायद, क्योंकि मुझसे connected है. We give the power. That is what I believe. True. And has it changed with you? A lot. Okay. A lot. Okay. Now I think I have started analyzing myself, that what I am worth of, instead of seeing myself through someone else's eyes. But I think एक मेरे अंदर बहुत अच्छा ये भी आया है. लोग क्या होता है usually heartbreaks हो जाते हैं तो बोलते हैं कि अरे यार अब प्यार नहीं करेंगे, अब ये नहीं करेंगे. People do that. I don't know if you agree with me or not. Yeah, they do. No, I used to. I think वो एक phase होता है. Because जब heartbreak होता है उसके बाद I think around 3-4 महीने you feel like कोई और मिलेगा नहीं. लेकिन उसके बाद then you get your shit together. उसके बाद फिर तुम्हें अकल आती है कि नहीं, जिंदगी में और बहुत कुछ है explore करने के लिए. हाँ, but मुझे ऐसा लगता है कि वो भी बहुत जरूरी था होना. Exactly. I feel that is important. Heartbreak is important in order to, subdue your life, in order to lead yourself towards progression. Yeah, true. That is what I believe. Agreed. Totally. So tell me something about your family. Family में कौन-कौन है और उनके साथ कैसा relationship है? I am one of the most, I would use the word over pampered child. Okay. पहले बहुत फायदा उठाती थी उस चीज का, अब नहीं उठाती. पहले I used to order दीदी ये लाना, दीदी वो लाना, दीदी मेरे कपड़े कहाँ हैं, दीदी. अब मेरी मॉम भी इनफैक्ट मेरे को बोलती है कि इम्प्रेस्ड, मतलब खुद खाना लेकर जाना और खुद उसको धोना.
ये लॉकडाउन में नहीं, आई थिंक ये इससे पहले ही आ गया था, जब मैंने आई थॉट ऑफ गोइंग टू सिडनी फॉर माई हायर स्टडीज. व्हेन आई थॉट ऑफ गोइंग टू सिडनी, ये चीजें तभी आ गई थी बिकॉज मेरे भाई ने मेरे अंदर इंस्टिल कर दी थी कि अगर बाहर जाना है तो सब कुछ खुद करना पड़ेगा. इनफैक्ट पेट्रोल भी डलवाना है तो खुद डलवाना है, हवा भी भरनी है तो खुद भरनी है टायर में, और टायर चेंज करना भी तुझे आना चाहिए. मेरे को पहले लगता था यार टायर कैसे चेंज करूंगी, मेरे पास मसल्स थोड़ा ये थोड़ा, बट धीरे धीरे अब आ गया. Even if I'm stuck on a highway, I would be able to do it. Perfect. So who are you the most closest to in your family? To be specific, it is my bhabhi that I am the most closest to. Okay. She's smiling. The moment she just entered the room. पता नहीं ऐसा क्यों मुझे लगता है मेरे ब्रदर और मेरी भाभी की लव मैरिज हुई है. Okay. तो वो मेरी दोस्त थी बहुत टाइम से, जब से उनका रिलेशनशिप था तब से वो मेरी दोस्त थी. तो ऐसी कोई भी बात नहीं है जो उनको नहीं पता मेरे बारे में. Okay. She knows everything and she's one such person. अगर मैं उनको बोलूँ ना okay I want this thing on this day, she'll be like okay done, you'll get it. तो अपने स्कूल या कॉलेज लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस, कोई किस्से याद हो, कुछ बातें याद हो? ऐसी चीजें बोलने से पहले बहुत बारी सोचना पड़ता है. क्यों? Because people judge you. Because me being a teacher, you know, there are a lot of things which people judge. कि अच्छा ऐसा है being a teacher, अच्छा ये हमारी teacher ऐसा करती है. So something like that. But just a while ago you said that you don't care what people think about you. That's contradictory. I don't care what people think about me in a minimized level. But you are conscious about your image. Little bit, yes. Of course, yes. Even you will be. Everybody in our lives. Of course, right now in the interview, you won't be giving a naked body pose or something like that. You think. Yeah. So I think it's pretty natural. लेकिन मैं वैसे काफी बेशर्म हूँ. मतलब I have been in the street play society of my college, और उसमें हम लोग इतने बेशर्म होते थे ना, तो हम लोग कहीं भी गली नुक्कड़ में नाचते थे. I used to be very shy before college. लेकिन उसके बाद फिर Same. I also belong to Astitva Theatre Society in my college, the Arts College. अच्छा. So I'm also a theatre student. नुक्कड़ नाटक. अरे. प्रैक्टिस करनी होती थी, इतनी धूप होती थी. और मुझे याद है मेरा एक रोल था ऑफ अ न्यूज रिपोर्टर. ओवर एक्टिंग करनी थी मुझे उस नुक्कड़ नाटक में. तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? इट वाज सो लाउड. उसमें बहुत एनर्जी जाती थी आपकी. ओके. तो हम बात कर रहे थे स्कूल लाइफ एक्सपीरियंसेस की. या कुछ ऐसे हैं जिनको मैं सच्ची में नहीं बता सकती, क्योंकि मेरे डैड टीचर है. मेरे डैड सीबीएसई में है. मतलब पूरा फैमिली ही टीचर है. सब टीचर है. वो सेम स्कूल में टीचर थे? हाँ. और मैंने उन्हीं की क्लास बंक करी थी. फिर पनिशमेंट मिली क्या? पनिशमेंट यू वोंट बिलीव. मेरे डैड ने मुझे जो oh my god that reprimand thing I still remember. तेरी बेटियों के. मैंने कहा पापा पता ही नहीं चला. और उस टाइम पे ना एनुअल डे की जो होती है ना, वो सारी प्रिपरेशन चल रही थी, और मैंने पापा को बोला कि पापा पता ही नहीं चला. उससे पहले स्पोर्ट्स का पीरियड था. पापा हम ग्राउंड में थे, पता ही नहीं. और मैं सच बताऊं, आई वाज विलिंग टू गो अपस्टेयर्स बिकॉज़ इट्स आई वाज लाइक या ही इज माय डैड, आई हैव टू गो अपस्टेयर्स, लेट मी गो. मेरे जो दोस्त थे ना उस टाइम पे, they all are out now and they all are settled. One is settled in Canada, one is in Dubai, so they are all out now. तो मेरे जो दोस्त थे ना उस टाइम पे, they were like कि नहीं यार कोई नहीं, देख लेंगे, कभी तो कुछ कर यार. I was the discipline squad head. तो कभी तो कुछ इंटरेस्टिंग कर यार, कभी तो बिगड़ी हुई चीज करो कुछ. हाँ, थोड़ा सा मतलब ये ओबीडियंस छोड़ो, थोड़ा सा disobedient बनो, एवरेज स्टूडेंट वाली लाइफ जियो. So they were pretty much in that कि यार ये सारा होमवर्क भी करती है, बिल्कुल सिंसियर स्टूडेंट. I was used to be really fat. तो ये सारी चीजें होती थी. तो इधर कुछ तो कर. मैंने कहा ठीक है, fine, you are literally going on my guts now, I'll do it. So I did it, but उसके जो repercussions थे, they were bizarre. Your dad is a teacher. So is he strict generally? Not at all. Not at all. Nice. मैं
एक चीज बोलना चाहूंगी that this is one such thing in my house that we can talk about anything. We make sure that on the dinner table we all are there. खाना वाना सेट है और पापा भी मतलब ऐसे कहते हैं कि मेरी प्लेट है, सीमा रुक जा मेरी प्लेट है, मैं धोता हूँ. अब अभी लॉकडाउन में ये चीज डेवलप हुई है. मेरी प्लेट है, सीमा रुक मैं आ रहा हूँ, मैं धोता हूँ. वो चीजें डेवलप हुई है. और मेरा भाई तो पहले से ही वर्क मतलब बहुत बहुत सबको पैम्पर रखता है. हैप्पी बर्थडे 1 2 हैप्पी बर्थडे. पता है सबसे इम्पोर्टेंट थिंग मुझे लगता है मुझे थोड़े टाइम तक आपका नाम प्रोनाउंस करना नहीं आएगा. शराब से शरब मतलब I've been called by many names. So it's the easiest to remember my name. No, I'll call Sharab se Sharab. Listen. That's too much. See, honestly, I am an ambivert, and there are times when I go too much loud and I'm an extrovert, but there are times when I just need my own space. Okay. I'm an introvert at that moment of time. I'm just someone, अगर मेरे को बहुत गुस्सा कभी आता है किसी चीज पे, और गुस्सा मेरे को यूजुअली मेरी फैमिली में अगर कुछ होता है तो आता है, बाहर के लोगों का इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करता मुझे. Okay. तो जब ऐसा गुस्सा आता है तो आई जस्ट कीप माई सेल्फ क्वाइट, क्योंकि मुझे पता है मैं गुस्से में बहुत बोल देती हूँ. Okay. तूने ऐसा नहीं किया, तूने वो किया था, मैंने तेरे साथ वो किया था. तो अगली पिछली सारी बातें का चिट्ठा, it's here. Okay. Instead of that, I try to just zip up. When I was preparing for my interviews, how pampered I am. My dad just got me banana. भगवान, सबको ऐसे भगवान, मम्मी पापा भाई बहन सबको ऐसे दे, सबको दुनिया में बहुत प्यार मिले भगवान जी. Love is very important in life, I feel. True. आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि you used to be very fat in school. Yeah. So like when did you decide to get fitter? ये लोग बहुत बारी पूछते हैं, बट सच बताऊं तो मैंने ऐसा कुछ डाइट फॉलो नहीं करा, ऐसा कुछ रिजीम फॉलो नहीं किया. It's been a process over the years. तो पहले तो हम लोग बहुत पहले when I was in second और first class तो स्कूटर पे थोड़े टाइम जाते, तो मेरे को बहुत शर्म आती थी कि यार स्कूटर पे, तो पापा लाइक बिकॉज स्कूटर पे शर्म आती, लोगों के पास स्कूटर नहीं होती है. तो दैट वाज जस्ट अ फेज ऑफ 2 months. उसके बाद गाड़ी ले ली थी. तो उसके बाद गाड़ी पे आना, गाड़ी पे जाना, एवरीथिंग, देयर वाज नो वॉक, नथिंग. घर पे आए, घर पे मॉम वो होता ना इतनी गर्मी से आए और मम्मा रोबजा बना के रखती हैं और परांठे होते हैं, परांठे के साथ आलू गोभी की सब्जी, रायता और सैलेड. So I used to eat a lot. फिर उठती थी, मेरी एक ट्यूशन होती, मैं ऐसे करके उठती थी. सर कहते थे, मेरे सर ने मुझे एक चीज सिखाई कि भव्या हमेशा याद रखना, किचन में कभी एसी नहीं होता. So always try to be a woman who never has to go in the kitchen. And ये बात मेरी मॉम ने भी मुझे बहुत बारी समझाई है. Develop yourself in such a manner that I'm not saying कि कोई भी काम नहीं करो, सिर्फ ऑर्डर करो. You should be having bifurcations of your personality. Could you elaborate on that? Yeah, of course. Talking about personality, a lot of people think that personality means wearing Gucci, Armani, Louis Vuitton, Chanel. People think that. They have this perception. But I genuinely feel that personality is all about how you present yourself. Okay. I'll tell you one of the incident. गेट नंबर 3 है हमारे यहाँ राम बिहार में, तो वहां से निकलती थी, तो मेरे को ना वो हमेशा सलाम करता था, जो गार्ड होता है सलाम करता है. ये क्या, मैं तो इसको कुछ पैसे भी नहीं देती, कुछ भी नहीं देती, मेरे को क्यों सलाम करता है. वन डे आई रियलाइज कि मैं इसको रिवर्ट करूंगी, मतलब मैं भैया को जैसे जब भी मेरे को ऐसे करेंगे ना, मैं इनको ऐसे करूंगी. और लिटरली मैंने उस दिन क्या किया, मैंने उनको ऐसे किया, स्माइल करके, चलाते हुए ऐसे स्माइल करके किया. और वो खड़े हो गए, वो बैठे हुए थे और वो खड़े हो गए, इतने खुश हो गए. हाउ यू बिहेव विद देम टेल्स अ लॉट अबाउट योरसेल्फ. ट्रू. आपके घर में जो मेड आती है,
उससे आप कैसे बात करते हो, उससे आप कैसे बर्ताव करते हो। उस दिन आंटी ना नीचे बैठती है जमीन पर, जो आती है ना आंटी, तो मैंने बोला आप जमीन पे क्यों बैठे हो? नहीं नहीं नहीं, हमारी का तो कोठी वाले। लाइक उन्होंने ये परसेप्शन बना दिया है क्योंकि हमने उन्हें बनाने दिया है। लाइक ऊपर बैठो आराम से, खुले बैठो आप। और ये चीज मैंने लॉकडाउन के दौरान सीखी है, सच बताऊं तो। जितने भी ये मेड जो गए नीचे, पार्किंग वाले भैया है हमारे, प्रमोद भैया है, तो भी जी सर जी सर जी सर हर बात को। इट ऑल्सो चेंजेस योर मूड। उनको तो चलो अच्छा लगा ही होगा, अपने आप को इतना अच्छा लगता है ना उस चीज के बाद। फॉर एग्जाम्पल हम लोग किसी कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, कहीं पर भी रोड पर जा रहे हैं, तो किसी का हल्की सी स्माइल करते हैं, तो वो भी खुश है, आप भी खुश हो, उससे हमारा कुछ नहीं जा रहा, उसका कुछ नहीं जा रहा, लेकिन थोड़ा सा आपका मूड, आपका ही मूड अच्छा होता है। उस दिन क्या हुआ, मतलब he was like कि पहले आप बैक कर लो, या ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा it gives you a lot of optimistic कि नहीं यार, दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं। थोड़ी सी कहीं उनके लग गई तो कोई बात नहीं मैम, मेरे से भी लग जाती है। कभी ऐसा हुआ नहीं था छुट मेरे साथ, बट ऐसा अगर हुआ कभी, तो अगर आप उस चीज को बहुत लाइटली ले लो तो वो वहीं पर ही खत्म हो जाएगी। बट एक मैंने अभी इंसिडेंट देखा था थोड़े दिन पहले ही हमारी लेन में, वो ना किसी की जैसे क्रिया होती है ना, समथिंग फ्यूनरल, तो उस पे आए हुए थे, व्हाइट कुर्ता पहना हुआ था, एंड दिस इज अ रियल इंसिडेंट। तो उसने बोला भाई पीछे कर तू, तो बोला दोनों फोर्ड थी और एक फॉर्च्यूनर थी, तो भाई तू पीछे कर, भाई तू, और ऐसे ऐसे करते करते दोनों की गाली शुरू हो गई, बीसी एमसी तू पीछे कर। और फिर 10 मिनट बाद हमने देखा कि वो गाड़ी से बाहर आ गए। तेरे को समझ में नहीं आया, तू आगे लेके आया था, तू पीछे कर पहले तू। और लिटरली उसी देर में हाथापाई शुरू हो गई उनकी। हाथापाई के बाद दोनों के सफेद कुर्ते लाल हो गए थे, पता है, और पुलिस आई। व्हाट वाज द इशू? ईगो इज द इशू है। चलो, आई आस्क्ड यू लाइक हाउ डिड यू ट्रांजिशन फ्रॉम बीइंग फैट टू अ फिटर वर्जन ऑफ यू, तो वो क्वेश्चन कहीं चला गया। So coming back to that question, it was all, I think, diet. I used to love paranthas, gobi parantha, aloo parantha with butter, with dahi. But after that, I joined this Yamuna Sports Complex where there is this aerobics which used to happen, because I used to think that, no offense to gym lovers, but I used to think gym is pretty boring. It's like, you know, weights and all that. I used to think that. This is my perception. So when I used to go to aerobics, it was a rejuvenating thing for me. It used to refresh me. और धीरे धीरे वहाँ से मुझे लगता है that turned into a routine of going to aerobics and then eating less. I'm not saying that खाना बिल्कुल छोड़ देना, eating right and eating less. और अब तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा change आया, because diet अब तो बिल्कुल different है मेरी. Like having chia, ये लोग मेरे फ्रेंड्स मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं कि नो इतना डाइट करके कहाँ जाएगी, बट अब मेरी डाइट बिल्कुल डिफरेंट है. Oats, chia, all those fancy things I had tried including, and that's how it is working now. Alright. हमारी बात हुई थी 2 दिन पहले, तो उसमें मतलब you wanted to discuss कि हम क्या बात करेंगे आज, जिसमें मैंने बोला था कि हम लोग प्लान नहीं करते हैं तो अच्छा. So you wanted to talk about personality development. I want to talk about personality development as a whole medium. See, everywhere I'm confident. Everywhere, in every aspect I'm confident, but whenever it comes about this thing, I don't know, I lack words, I lack sentiments, or I have that sort of dreadfulness inside me that people will judge me. Accurate, vigilant, observant, concrete, correct, concise, comprehensive. अगर आप कंट्रोल कर सकते हो तो स्ट्रेस करो, कंट्रोल नहीं कर सकते तो स्ट्रेस मत करो. Always go with people who prove their words into action. I feel low at that moment in time, and that's just for, I would say, flash of minutes. In the next 5 minutes, I know that I'm going to have my dinner with shahi paneer that's been made up in kaju ki gravy. There's no pill of English. You can have it, and the other day you're just blabbering English. It's a process. ऐसे होता है ना, और मैं फटाफट से I go in my washroom and then I cry a lot and then I wash my face and then I come out like oh blah blah. भगवान जी प्लीज, मैंने बहुत मेहनत करी है. मैंने बहुत मेहनत करी है, आज तो मैं जोत भी चला रही हूँ. I'm just behaving like a good girl. जब आप जा रहे हो तो लोग आपके जाने पर रोए ना हंसे. बन गया शाही पनीर? वाओ, ये प्लीज काट देना. हो जाएगा.
बाद my mom was like, where are you going? मैंने कहा मम्मा खाने. तो मैंने कहा it's just a normal live session है. बोला oh Insta live. मैंने कहा नहीं it's just an interview. Mom was giving me a look. Very good, very good.